study local things and how to open plan एक कंपोनेंट मेमोरी मतलब कि स्टेट में कंपोनेंट कैसे मेमोरी किया जा सकता है कंपोनेंट ओपन नीड टू चेंज बोर्ड ऑफ द स्क्रीन एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन टाइप इनटू फ्रॉम शुड अपडेट इनटू इन फील्ड क्लिक नेक्स्ट ऑन द इमेज a cursor should change which display click buy and should put product in the shopping cart component with things the current input shopping cart in React the kind of component specific memory is called you will learn how to add state variable with use state hook what pair of value of use state hook return how to add more or one state variable why state is called local when a regular variable it is enough here is a component that renders a scriptural image clicking the next should have the next capture by changing the index to 1 to 1 however you would like this there is image next there is not working if I copy that data go to this and here I create data.js that is JS file and paste my data here and go to state and import and data and sculpture list import sculpture list from data and discount from data and go down what is the next all.jsm export different function gallery export different function gallery that is the image and we have the copy just here and do not export different function it is only function and function gallery and you can see जैसे ही हम वेब पेज में आते हैं वैसे यहाँ पर आर्टिकल मिलेगा और नेक्स्ट पेज यहाँ पर मिलेगा जिस तरह यहाँ पर नेक्स्ट पेज में तो बटन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इसमें तो क्लास में आते हैं पेडिंग x = 4 और पेडिंग y = 2 bg black and text white and margin bottom and this is the button look like and I think we can control this down and generate class सडनली का चिट्ठी का इधर ना कितना बनाई तुझे मैं इंग्लिश पे असरी it is not working. It is a gallery
और कहीं जगह नहीं मिली? how to work anything. Okay, so console index. Console index, go to this and just yes, it is working. It is working, but image not showing. How do image work? So, and it is spectrum 1, image name, vector and artist name, URL. तो इसको URL भी चाहिए, इसको फंक्शन नेम होगा या तो यहाँ पर एक स्टेट डिफाइन करनी पड़ेगी। मैंने स्पेक्ट्रम का है जिसको इनसे डाटा मिल जाएगा और इंडेक्स 0 पर इसको डाटा मिलेगा। तो यहाँ पर हम ऐसा ना करके कॉमन से लेंगे, तो यहाँ पर इंडेक्स लिखेंगे और सेट इंडेक्स करेंगे, सेट इंडेक्स और बाय डिफ़ॉल्ट यूज स्टेट देकर बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगी इंडेक्स इसकी। तो यहाँ पर तो ऐसा ना करके सेट इंडेक्स तो इंडेक्स में जो भी होगा उसकी वैल्यू +1 कर देगी जब भी वो क्लिक होगा। ओके, so when I click that here, it is change mean because that 4 + 1 is going to 5. It is a given error waveform. तो यहाँ पर हमको एक लॉजिक लिखना होगा, अगर इंडेक्स लेस देन इक्वल टू 11 है तो इसको प्रेस करें, और एल्स में आप करें, एल्स में आप क्या करोगे, एल्स में सेट इंडेक्स को फिर से 0 कर देना, तो हमारा लॉजिक काम कर जाएगा। हम रिफ्रेश करते हैं इसको, नथिंग ये है, एंड 1 क्लिक, 2 क्लिक, 3 क्लिक, 4 क्लिक, 5 क्लिक, 6 क्लिक, 7 क्लिक, 8 क्लिक, 9 क्लिक, 12 क्लिक, 13, which is now given error. Error also is next. They handle click event and updating to local variable index, but to this prevent change from being available. Local variable don't persist between render. When React render this component second it render it does not local variable. Change the local variable from the trigger. React does not relax it needed to render a component again with the new data. To update a component with the new data, thing to happen. Return the data between data triggered. Integral React render to component with data rendering. So use state to provide those two things. A state variable to return the data between render. A state setter function to update variable trigger React render to component again. Adding the variable like this. Let index replace this like this. Our index set index function work with array list structure. For and syntax what array list structure from then references and let's read the value from the array return the list of values as set like two item and the index. It is like that. Like
For that, it is not a very convincing. Meet your first hook. The React user state as well as another function will use. With using called a hook. Hook is a special function available in React Project which will get into more detail on the next page. They use hook into different React features. That is one of the feature. Meet a hook later. Pitfall. Hook function starting with user can only call the top level web component on your own hooking. You can't open the condition other made over. How are function bolt helpful thing them as partner to detail about your condition. Need you use React top components in a physical nature. Other Antonio what using your state like that. And in case you want to react to remember index, the convention to name calls something and set something. And you could not name anything different like convention thing is to understand across project. The only argument your state is initial value of your state variable. In this example, the index initial variable is set at 0 with your distance 0. Every component user containing the variable index within the set index updating protocol executable React to render the component where how to happen action index and index 0 used. UR component render first because the index past 0 set is initial value index it will happen 0 set index and React remember 0 is the latest set value. You update the button click set index into 0 which is index set is into 1 that is reactive number index is 1 or trigger another render you component second render like that and but because reactive that you set index to 1 and it return 1 set index and so on इसी तरह चलता रहेगा giving a component multiple string variable जैसे कि इसमें यहाँ पर ये सोरेटिंग होने का ट्रू और फॉल इसको कैसे कर सकते हैं फॉर्मूल इज सो मोर सो मोर तो जैसे ही हमारे पास तो यहाँ पर एक डेटा कौन इसको लिखते हैं शो अनसेट तो स्टेट भी ऐसे लेनी है जो उसको डिफाइन नहीं करे कि हम इसको यूज कर रहे हैं तो यूज स्टेट लेंगे तो उसको बाई डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर देंगे और यहाँ पर एक बटन लिखेंगे बटन विल बी सेम होगा सेम होगा और यहाँ पर एक लेजेंड अगर शो ट्रू फॉल्स है ट्रू है तो हाइड लिखा है अगर फॉल्स है तो इस पर फॉल्स है यानी कि हाइड फॉल्स है तो फॉल्स है तो कंडीशन हाइड होगा और फिर इसको तो शो करेंगे अगर कंडीशन शो तो बाई डिफ़ॉल्ट फॉल्स शो कर दें और यहाँ पर जो हमारा कंटेंट है कंटेंट रिलेशन अच्छा नहीं है तो हम अपने इस कंटेंट को यहाँ से उठाकर इसको डाल देते हैं और बटन को भी यहाँ पर जाकर आस पास इसको ट्रू तो तभी देखिए तो उससे पहले मैं
जैसे हम चाहते हैं यहाँ पर अपने इसमें तो हमने इसका ओनियन करा बिकॉज इट इज़ अ फॉन्ट्स realize that it is not so it is a handle view तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं यहाँ पर set so just show more उसको to the phones and the phones and the true hide करो so and hide so and hide so and hide go down so and hide okay you can see that some more detail some more detail that's so more ladies and गैलेक्सी फंक्शन बनाया हुआ है it is going to either to multiple state variable index and so in the but you pointed out open change to state variable to the variable item is combined them into one example if you form many window it is the more conventional to have a single state variable that hold an object state variable be choosing structure for mode so how does react at the state return to redact कैसे करते हैं you might notice that your state code cannot be received any information about which state variable refer to the identifier that has passed to your state so how does it know which of the state variable return does it really on some magic likely preparing of function the answer is no instead of the level that convention the syntax of really on the state table called order every render the same component this work well at practice because if you follow the more rules about only equal hook that at top level hook will be always equal the same order of action additionality internal plugin internal capture most mistake internally react array of static error for every component it also most contain current program text which is recorded and previous static activity the next here and will create the text you can most about the mechanism react token react not matching just array just you can read this article from medium react just just you can read all this article from medium just go realize consumer return you can always multiple at a time you can always multiple at a time जैसे कि हमारे पास पहले ही गैलरी है इस पर दो बार भी ये कर सकते हैं इस पर से कर सकते हैं कि फ्लैक्स कॉल करते हैं इसमें फ्लैक्स आते हैं ऐसे ही रहते हैं
अभी भी छाई तो ना चिट्ठी करी ना तो सारा का है दोनों को काहे का दो they mistake they what make it different from regular variable and automatically from sustainability is the idea of playable and PC section about the MS section description of the section diffuse games okay in Galley component there is penalty also present component what is the rate of component what you want to validate there is you can write a way to react to demonstrate and print component and therefore component just current the master and what you want to effect of the application the topic state recap use the variable component remember some information about information between the state variable and declared by calling user state program and hook are special function started use and they let you hook into their future like state hook might remind you between whom they need to be called condition calling hook including registered and verified hook they use state hook return player variable the current state and the function updated you can state variable into return visible or a state component if you run the yes which current state tie out this challenge even complete the logic and when the last capture code crash when the last function is a crash there's just some command to crash with a crash so people you may do adding extra logic entry by action possible after fix the previous written favor provide a special outcome crash on the first capture तो make sure that ski value so there is तो हैंडल के लिए प्रीवियस लॉजिक चलना चाहिए तो प्रीवियस तो दो बटन बनाने पड़ेगा ना इसमें तो ये बटन आ जाना चाहिए तो मतलब जैसे तो इसका ही देखना तो इसमें कैसे बनाया है और देखो लास्ट और देखो लास्ट और ऐसे प्रिंट मैं अगर Hello. लेफ्ट हैंड से प्रिंट x greater than 0 से बराबर था अगर बैंक से माइनस 1 हो जाए तो माइनस 1 हो जाए तब तो कौन सा जाएगा ये तो मुझे करना स्क्रीन से दिखाना here you will be taken to
इसको यहीं पर इम्प्लीमेंट करते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास ये बटन है इसको जाती है इसको कॉपी करते हैं तो इसको प्रीव्यू प्रेस करते हैं इसको नेक्स्ट करते हैं मैंने इसका लॉजिक लिखा है यहाँ पे लेट एस प्री के लिए इंडेक्स का ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए और जब भी 0 से छोटा होगा तभी डिसेबल होगा ऐसा ही है तो हमारा ये बटन 0 डिसेबल टिको तो तभी डिसेबल होगा इसको मार्जिन राइट 5 करते हैं और यहाँ पर जाकर एडजस्ट नहीं यदि डिसेबल हो जाए तो डिसेबल बटन भी होना चाहिए तो इसके हमको यहाँ पर ही यहाँ पर नहीं लिखते इसको लिखते हैं यहाँ पर अपने लॉजिक के साथ डॉलर करते हैं इसके साथ लिखते हैं यहाँ पर एस प्रीव्यू ट्रू है तो आप ट्रू है तो ये वैल्यू लिखिए क्या देगा बीसी इंग्लिश टेक्स्ट होगा डिसेबल
और इसका बीजी वन हो जाए और टेक्स्ट ब्लैक हो जाए। क्या है इसमें? Same class we are right here and just here is not as preview. It is disable from as preview and that is next. And इंडेक्स के जो हमारी स्क्रिप्चुअल लेंथ है उसकी माइनस की 1 है लेस देन। तो यहाँ पर लिखते हैं एस नेक्स्ट लिखते हैं एलिमेंट्स दिस स्क्रिप्चुअल बिफोर नेक्स्ट है हम इसकी फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर इसको हटाते हैं हैंडल क्लिक पर इस तो ये काम करें सेट इंडेक्स और इंडेक्स को +1 करते रहो और फंक्शन प्री में जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इफ एज प्रीव्यू ट्रू है तो सेट इंडेक्स पे जाए और आप इंडेक्स को -1 करते जाए और यहाँ पर हमारे पास तो उसका मतलब है हैंडल प्रीव्यू। तो यहाँ होने पर हम जाते हैं यहाँ पर डिसेबल हो रहा है यहाँ पर पीछे नहीं हो रहा है डिसेबल यहाँ पर डिसेबल होगा नोट ओके और यहाँ पीछे हट जाता है डिसेबल। तो ये तो हो कंप्लीट इट इज नॉट a line last time cross
कह रहा है कि हमको फिक्स करना है वैल्यू टाइप इनटू इनपुट फील्ड। जब भी हम टाइप करेंगे इनपुट फील्ड में नथिंग appear it is look like input value string with empty string the value first input set is first name and variable value for the input and then last the character both input value on change event update variable first last user however you between remainder fixed by the variable। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ से इनको हटाना होगा। इनको हटाने के बाद यहाँ पर करना होगा कॉन्स फर्स्ट नेम और सेट फर्स्ट नेम। तो ऐसे करने के बाद सो यहाँ पर तो यूज स्टेट आएगा ना, यूज स्टेट तो स्ट्रिंग इनपुट है ना, तो सबसे पहले इसको इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम दैट इंपोर्ट यूज स्टेट कहाँ से करना है, फ्रॉम रिएक्ट लाइब्रेरी ओके। तो इसी तरह हम मास्टर में देखते हैं वही चलिए तो यहाँ पर लास्ट नेम करेंगे और यहाँ पर भी लास्ट नेम। अब ये तो हो गया हमारे पास, ये सब दोनों हमें सेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी गलत है, इसको करेंगे सेट फर्स्ट name, set the first name and for this और इसी तरह set last name ओके। अब अगर टारगेट होता है तो यहाँ पर करते हैं set first name इसका last name सबसे बड़ी बात है उसको हटाते हैं, ये भी करते हैं, इसको करते हैं और बेटा भी करते हैं फर्स्ट नेम and don't copy them and just first name तो यहाँ पर लिखते हैं नादिया, यहाँ पर लिखते हैं आदि। सेट दैट इज कंप्लीट चलिए तो हमें यहाँ पर फिक्स करना है, क्या फिक्स करना है पहले मैं बताया। हियर इज ए स्मॉल फॉर्म दैट इज सस्पेंड लेट द लीव सम फीडबैक और व्हेन फीडबैक इज सबमिटेड it is a supposed display thank you, however it is a class error message rendered failure how expected can you mistake fix that hello I'm just go it is error। तो यहाँ पर फॉर्म डेटा डिफॉल्ट कर दिया है बच्चा जो सेट इस सेंटेंस शुरू और जब सेंटेंस रिजेक्टिव हो जाए तो यहाँ पर लिखा है थैंक यू और क्या तो बिल्कुल गलत किया हुआ है सर आपने, आंसर से का रेंडर हो गया हो। सबसे पहली बात जो आपको आंसर हटाना होगा क्योंकि हम रिएक्ट के अंदर और रिएक्ट के अंदर चलता है टर्मिनल ऑपरेटर। तो
का टर्नरी ऑपरेटर के लिए हम यूज़ करते हैं जो स्टेप है। अच्छा, इसने पहले का गाना का चला बहुत बढ़िया। अंकल यहाँ का जा सबसे पहले हमको बनाना इसमें पेज सेट। Thank you for watching this beautiful